Now, the next type of respiratory organs which are present in the vertebrates are the lungs. The lungs are the most important organs of respiration because the vertebrates, that is terrestrial vertebrates, they only possess the lungs. So the lungs are the primary organ of respiration in the reptile, birds and the mammals. Although some of the fishes, such as the fishes belonging to the order Dipnoid, they also called as the lungfishes because they have the swim bladder which act as a lung, right? So let's see the first, that is the lungs in the lungfishes. So these lungfishes, they have the swim bladder which actually act as the lung. So some of the lungfishes are there, such as Neoceratodus, the Protopotaris and the Lepidosirens, which have the lungs which help in respiration during the estivation period of these fishes. That means the time when they don't have the adequate amount of water present in their surrounding, or the water so available have the low content of oxygen. At that time, these fishes, they more rely on the pulmonary mode of respiration that occurs through the swim bladder, or we can say that their lungs, and it will help the fish to survive in the inadequate conditions. So this is the lungs of the Protopotaris. Protopotaris have the two equally sized lungs or the swim bladders which have the alveolar circulations within it. ये alveolar circulations means the sacules are formed within the lungs which will actually increase the surface area of the lungs so that the efficient exchange of gases that can take place. The alveoli are also present in mammals. Mammals के alveoli से तो आपको अच्छे से आपको ध्यान होगा, आपने ये जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है. So alveoli, they actually increase the surface, that is the respiratory surface, so that the more exchange of gases that can take place. So here are the pulmonary arteries which supply the blood and the exchange of gases that takes place within the lungs. Now talking to the Lepidosiren, the another lungfish that have two unequally sized swim bladders which act as lung. Here it have a longer right lung, whereas the left lung is smaller in size. So it have the sacculation, that means this the alveoli like sacculation that are only present in the proximal part and not present on the distal part. So that's why they are drawn on this area also. So these the sacculation, they will increase the surface area for the respiration. Now coming to the lungs in amphibians. Amphibians, they also have the lungs which help in respiration. But let me tell you that amphibians, they have the three type of respiration. When you will study the class Amphibia in animal diversity, then you will come to know that amphibians have three type of respiration. First is the cutaneous respiration that occurs through skin. The second is the pulmonary respiration that occurs through lungs. And the last one is the buccopharyngeal cavity. So in case of the amphibians, the most important type of respiration is the cutaneous respiration, that is the respiration through skin. And most of the amphibians, they rely on the cutaneous respiration. ठीक है, तो lungs के थ्रू respiration जो है वो amphibians तभी करते हैं जब वो water से बाहर होते हैं. ठीक है, अगर वो पानी के अंदर है, so they only respire through the cutaneous respiration, whereas the skin that actually help in the respiration, that is that there is a direct exchange of gases between the skin and the oxygen which is present in the water outside. So the lungs in amphibian, let's see the diagram. This is the diagram of the amphibian's lung. They are thin-walled, hollow, elongated structure which are present in the interior part of the body on the either side of the heart. Here heart is present, so on the both the side they are present. Now the lungs, they show this type of structure. If we look at the TS, it have the outermost layer called as the visceral peritoneum, which is made up of the flat cells. Then on the inner side have the connective tissue. This connective tissue consists of the blood capillaries and the smooth muscles. And the innermost layer that is made up of the flat and thin mucosal membrane and which is raised to form the septa. Right? These septa actually form the alveoli. ठीक है, बिल्कुल वैसे ही alveoli जैसे हमारे केस में प्रेजेंट होते हैं, बट उतने ज्यादा alveoli जो है वो अच्छे से नहीं बने हुए जैसे हमारे बहुत राउंडेड शेप के और काफी ज्यादा नंबर में alveoli होते हैं, उतने ज्यादा alveoli प्रेजेंट नहीं है
amphibians में, but still the alveoli are formed here, which will increase the surface for the process of the respiration. And in the center we have the lumen of the or we can say the cavity of the lungs. So if we look at the track, that how the air that will reach to the lungs, so here is the diagram. These are the lungs. The lungs will get air through this track. The first thing that comes through which the air that comes into the body is the external layers. The external layers that will open out, then the air will rush into the nasal chamber. Then after that it will go through the internal layer. From the internal layer it will come to the buccopharyngeal cavity. So this buccopharyngeal cavity that also act as a respiratory organs, because it is also being supplied by the blood. So here some of the exchange of gases that also occur in the buccopharyngeal cavity. And after that the air that will pass through the glottis, and then it will move to the laryngeotracheal chamber, and finally it will move to the lungs. So this is the track of the air when it will move to the lungs. Now next is the lungs of the reptiles. So here is the diagram of the lungs of the reptiles. The reptiles, they are true terrestrial animals, so they rely only on the terrestrial mode of the respiration, that is through lungs. Let me tell you one more thing, that in case of the other amphibians such as cecilians are the amphibians which are snake-like. I have shown you the specimens of cecilians during their practical class. So cecilians are the snake-like amphibians. They only have one of the lung, that is the left lung is reduced and only the right lung is there, which have the alveoli present over its surface. उसमें काफी सारे alveoli होते हैं, और ऐसे हमारे कुछ salamanders हैं जहां पे lungs जो है वो absent होते हैं. ठीक है, तो lungs absent होंगे तो respiration कहां से होगी? Respiration that occurs through mainly the cutaneous mode of respiration is there, and the buccopharyngeal mode of respiration is also there. So here is the next animals where the respiration through lungs or the pulmonary respiration that occurs, and this is the diagram of the Hemidactylus, lungs of the Hemidactylus, that is the wall lizard. Now the lungs of this animal, there is a pair of lungs which is present in the thoracic cavity. On the sides of the heart they are thin walled, elastic, and most of the time they are orangish in color. So they are equally sized, and they also have the septa or the raised area within them which form the lung alveoli. बिल्कुल वैसे जैसे आपके फ्रॉग के केस में लंग्स, आपके एम्फीबियंस के केस में लंग एल्वेलाई थे, वैसे इधर भी लंग एल्वेलाई होंगे. बट द लंग्स दे are more vascular, that means they have the high supply of the blood on the interior side rather than the posterior side. Now there are some exceptions in case of the reptiles also, that is in case of the snakes the left lung is sometimes very smaller, and many of the snakes they don't have the left lung, means the left lung is absent. In some of the lizards, the right lung is larger in size. And most important, chameleon. You all know what is chameleon. The chameleon, it also have the ear sacs which are present in birds. Now this ear sac is a very important question that is asked many of the time in your examination. Ear sacs are what? Ear sacs are the balloon-like structure which are present with the lungs, and the most important function of the air sac is that they will supply the fresh air to the lungs during the expiration also. अगर हम अपनी बात कर लें, या हमें अभी तक जितना भी पता है, हमें ये लंग्स के बारे में हमें पता है कि ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन ओनली वी गेट द फ्रेश एयर, बट ड्यू टू द presence of the air sacs which are the accessory respiratory structure which are associated with the lungs, which are present in birds most commonly, and some reptiles such as chameleon, they will provide the fresh air during inspiration and during expiration. Expiration के दौरान जो है ये एयर सैक्स फ्रेश एयर प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, सो ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम नेक्स्ट हमारा वीडियो देखेंगे, जिसमें कि वी विल स्टडी द डिटेल द स्ट्रक्चर ऑफ द एंड द फंक्शनिंग ऑफ द एयर सैक्स ऑफ द बर्ड्स. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द लंग्स ऑफ द लिजर्ड्स. नाउ द नेक्स्ट animal is the mammals.
सो मैमल्स में आपने +2 में भी फिजियोलॉजी में बहुत अच्छे से मैमल्स के लंग्स का स्ट्रक्चर, हाउ द डिफरेंट लेयर्स दैट इज द प्लूरल मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट ऑफ द लंग्स एंड द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, दिस यू विल डू बाय योरसेल्फ, क्योंकि ये आपने बहुत अच्छे से +2 में किया हुआ है, तो आई एक्सपेक्ट कि आप खुद करेंगे. दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स एंड द फंक्शनिंग ऑफ द मैमेलियन लंग्स, राइट. सो दिस यू विल डू बाय योरसेल्फ. नाउ द नेक्स्ट इज द मैकेनिज्म. सो मैकेनिज्म की अगर बात करते हैं तो 3 एनिमल्स का मैकेनिज्म जो है रेस्पिरेशन का भी इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन ऑफ एयर सैक्स विच इज एसोसिएटेड विद द बर्ड्स, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जब सेंड करूंगी तो उसमें अलग से बताएंगे. नेक्स्ट इज द मैकेनिज्म ऑफ पल्मोनरी रेस्पिरेशन इन मैमल्स, जो आप खुद करेंगे. एंड द लास्ट वन इज द मैकेनिज्म ऑफ पल्मोनरी रेस्पिरेशन ऑफ द एम्फीबियंस, राइट. So in case of the amphibians, there are 2 types of muscles which are associated with the respiration, and these are the sternohyoid muscles and the petrohyoid muscles. Now the sternohyoid muscles, they are attached with the sternum. You all know pectoral girdle के साथ ही sternum होता है, sternum के साथ attach होते हैं और फिर वो hyoid apparatus तक जाते हैं. That is the sternohyoid muscles. When these sternohyoid muscles will contract, they will pull down द बकोफरेंजियल कैविटी और द बक्कल फ्लोर को ये लोअर करेंगे, नीचे की ओर मूव करेंगे, ठीक है. द नेक्स्ट मसल्स आर द पेट्रोहाइल मसल्स विच आर अटैच्ड फ्रॉम द स्क्यूमोजल बोन टू द हाइड अपरेटस. जब आपको मैंने स्कल प्रैक्टिकल में शो किया था तो मैंने बताया था वेयर द स्क्यूमोजल बोन इज देयर. सो फ्रॉम द स्क्यूमोजल बोन टू द हाइड अपरेटस these petrohyoid muscles they extend. When these petrohyoid muscles they will contract, they will bring the buccal floor towards the upside. That means they will move this buccal floor on the upper side, or they will raise the buccal floor. Now coming to the mechanism, which is very important. So the mechanism of respiration in case of the amphibians, it includes 3 phases. 3 phases. One additional phase is there. First phase is inspiration and second phase is expiration. तो सभी के केस में, चाहे आपके रेप्टाइल्स हों, आपके बर्ड्स हो, मैमल्स में, सभी में 2 ही फेजेस होते हैं, एक इंस्पिरेशन और एक एक्सपिरेशन. बट इन केस ऑफ द एम्फीबियंस वन मोर एक्स्ट्रा फेज इज प्रेजेंट कॉल्ड एज द एस्पिरेशन. सो लेट्स सी व्हाट इज दिस एस्पिरेशन. Let's see the diagram. So aspiration is what? Aspiration is the taking of the fresh air into the buccopharyngeal cavity. For this, this structure, that is the external layers, ये स्ट्रक्चर जो है, ये जब हमें क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द लंग्स ऑफ द एम्फीबियंस, तब भी हमने थोड़ा सा ये जो ट्रैक है इसको हमने बताना है, ठीक है. तो जो हमारा ट्रैक होता है जहां से जो एयर है वो पास ऑन हो रही है लंग्स में, दैट ट्रैक इंक्लूड्स द एक्सटर्नल लेयर्स, देन एयर दैट मूव्स टू दिस, दैट इज योर नेजल चैम्बर, देन इट मूव्स टू द external layers, then buccopharyngeal cavity, then glottis, then is your this channel, that is your laryngotracheal chamber, and then finally that air that moves to the lungs. So during aspiration what happens, the external nostril that will open out. ये आपका external nostril जो है, external nostril वो open out होगा, and the air that will move to the nasal chamber. nasal chamber के पास जाने के बाद आपकी जो ये external layers है ये भी open out हो जाएगा. मीन्स आपके दोनों chambers, दोनों जो आपके ये layers हैं, that is external layers और internal layers, they are open at the time of the aspiration, so that the air that easily rush into the buccopharyngeal cavity. ठीक है. और ये कैसे रश करेगी? दिस रश बिकॉज ऑफ द कंट्रैक्शन ऑफ द sternohyoid muscles which are present here, which on contraction will lower down the buccal floor. जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बक्कल फ्लोर लोअर हो जाएगा, एंड हियर द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस दैट इज लेस, सो द एयर विल इजिली रश इनटू द बक्कल cavity, buccopharyngeal cavity. Now some of the exchange that also take place in the buccopharyngeal cavity because it also act as a respiratory organs. So थोड़ा सा exchange of gases जो है वो यहाँ पर भी हो जाता है, ठीक है. So this is what? This is the process that is the aspiration. Now what is the next process? The next process is the common process, that is the inspiration, in which the air from the buccopharyngeal cavity that will move into the lungs. Now
during inspiration, what will happen? Let me tell you that during this entire process, the mouth that will remain closed. Mouth जो है वो बंद ही रहेगा. During the inspiration, what will happen? The buccal floor is raised. Now this floor is raised due to the contraction of the another muscles called as the petrohyle muscles, जो आपके स्केमोजल से लेकर हाइड्रोपेटस तक एक्सटेंड कर रहे थे. जब वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली योर बक्कल फ्लोर दैट विल रेस्ड. नाउ हियर द pressure that will increase. This increased pressure will open this opening called as the glottis, and the air will rush from the buccopharyngeal cavity into the lungs, and lungs they will expand out because the lungs they are elastic in nature. The muscles here are elastic in nature, so it will increase in its volume. So here is the empty lung which is looking smaller in size, whereas the lungs when they get filled with air they become quite enlarged. So this is inspiration. ठीक है, तो हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. Aspiration means moving of air from the outside to the buccopharyngeal cavity. And what is inspiration? Inspiration means the moving of air from the buccopharyngeal cavity to the lungs. So this is inspiration. Now during inspiration, the exchange of gases that takes place between the air and the lung alveoli. ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो जो है वो एक्सचेंज हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड से वापस लंग्स में चले जाएगी. नाउ वी हैव टू टेक आउट दिस कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर आउटसाइड. सो वी विल the lungs they will perform the next step, that is the expiration. So what is expiration? Expiration means it is the moving of the foul air outside. So here are the diagrams for the expiration. Expiration that involves the two diagrams. So first of all, in first step again the buccal floor will be lowered down. ठीक है, इंस्पिरेशन में अगर आपको ध्यान हो, इंस्पिरेशन में बकल फ्लोर जो था वो रेज्ड हो गया था, लेकिन अब एक्सपिरेशन करनी है तो हमें एयर यहां से वापस लेके आनी है यहां पर. तो फॉर दिस वी हैव टू लोअर डाउन द बकल फ्लोर. सो दिस विल बी done with the help of the muscles called as the sternohyle muscles. The sternohyle muscles they will contract and again they will move the buccal floor towards the lower side, right? So क्या होगा यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस जो है वो लोअर डाउन हो जाता है. सो जिसकी वजह से जो आपका लंग्स है उससे एयर जो है वो बकोफ्रेंजियल कैविटी में रश ऑन कर जाएगी. ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज ऑल्सो एडेड बाय द इलास्टिसिटी ऑफ द लंग्स. द लंग्स दे आर हाईली इलास्टिक इन नेचर, सो they will allow the air to pass here, and also the muscles they will contract. The muscles of this lungs they will contract, and the body muscles they will also help in the emptying of the lungs. ठीक है, तो lungs empty हो जाएंगे और air जो है वो वापस आपके कहां पर आ जाएगी, buccopharyngeal cavity में. So this is the first step of the expiration. Now what will happen during the second step of expiration? This buccal floor will again raised by the contraction of the petrohyle muscles. ठीक है, पेट्रोहाइल मसल्स जो है वो फिर से रेज करेंगे और आपका जो ये बकल फ्लोर है वो ऊपर की ओर जो वो रेज हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैसेस जो है वो फिर से इंक्रीज हो जाएगा, ड्यू टू विच द इंटरनल नियर्स एंड एक्सटर्नल नियर्स दे विल मूव, दे विल ओपन आउट. जब ये ओपन हो जाएंगे तो यहाँ पर जो गैसेस है वो एकदम से बाहर की ओर जो है वो रश ऑन कर जाएंगे. So this is the entire process of respiration in the in your amphibians, which includes 3 steps. First is aspiration, then is inspiration, and the final step that is expiration. So this is very important question from the examination point of view. You will explain this diagram with explain this question with the diagrams. आपने diagrams जरूर बनाने हैं, तभी ये आपका जो है वो question जो है वो अच्छे से attempt हो पाएगा. Now coming to the reason that why this pulmonary respiration is not very efficient in case of the amphibians. You all know that here the track is very long
and the process is also very long. So this is a slow process and one respiratory cycle that includes 10 to 15 minutes. एक respiratory cycle को, that is the aspiration, inspiration, एक्सपिरेशन को 10 to 15 मिनट्स लग जाते हैं. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना स्लो प्रोसेस है. तो इस वजह से जो एम्फीबियंस है, दे डोंट रिलाई ऑन दिस मोड ऑफ रेस्पिरेशन. अनदर थिंग इज दैट द सरफेस एरिया ऑफ द लंग्स दैट इज वेरी स्मॉल, क्योंकि इतने ज्यादा एल्वेलाई नहीं है जितने ज्यादा एल्वेलाई बर्ड्स और मैमल्स में होते हैं. सो ड्यू टू द स्मॉल surface area, the exchange of gases is also not very efficient. And the next is that कि जो हमारे पास जो एयर आ रही है बच्चों, जो हमारे पास स्टूडेंट्स, जो एयर आ रही है यहाँ पे लंग्स में, दैट इज अ मिक्स्ड एयर. व्हाई? बिकॉज सम ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस दैट हैव टेकन प्लेस इन द बकोफरेंजियल कैविटी, बिकॉज द बकोफरेंजियल कैविटी हियर इज ऑल्सो अ ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन. सो यहां से मिक्स्ड एयर जो है वो लंग्स में पास ऑन हो रही है. तो लंग्स में जो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन यहां से आई है, वही एक्सचेंज जो है वो पॉसिबल हो पा रहा है. सो दैट्स वाई this is not a very efficient mode of respiration, and this is the reason that the amphibians, they rely more on their cutaneous mode of respiration than the pulmonary mode of respiration. So यहाँ पर जो हमारे lungs हैं, ये as a hydrostatic organs भी act करते हैं, means they help in floating of the animal. ठीक है, ये एयर फील्ड कैविटीज हैं जो एक्चुअल में इसको फ्लोटिंग में भी हेल्प करेंगे, राइट. So this is all about the respiration in the birds, respiration in the mammals. ये हमने अच्छे से लर्न करना है. इसके अलावा हमारा एक और टॉपिक है जो मैंने बर्ड्स वाले मैकेनिज्म में कवर नहीं किया है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द syrinx. So we will start with that. So this is the diagram of the syrinx. Syrinx is what? Syrinx is a special structure which is present in birds and it acts as a sound producing organs. We all know that the sound producing organs in other vertebrates such as the mammals, that is the larynx. So here in case of the birds, the larynx is not the sound producing organ, it is the another organ called as syrinx. So it is anatomically important. So that's why sometimes the question of 3 and 4 marks that is also being asked on this, that is the syrinx. तो कई बार ये शॉर्ट नोट में पूछ लेते हैं, तो ये आपने जरूर लर्न करना है. और ये डायग्राम जो है हमने वो उसको भी हमने अच्छे से लर्न करना है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द बर्ड्स, द ट्रेकिया ऑफ द बर्ड इज वेरी लॉन्ग, राइट. काफी लंबी सी ट्रेकिया होती है बर्ड्स में, और कई बार वो कॉन्वोल्यूटेड भी होती है और लूप्स के फॉर्म में भी प्रेजेंट होती है. ठीक है, सो जो ट्रेकिया है वो उस ट्रेकिया में ही जो है हमारा ये सिरिंक्स प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो ये हमारा ट्रेकिया है. ट्रेकिया आगे बाइफर्केट होके आपका ब्रोंकाई बनाता है. सो द लोअर rings of these are what? These are the tracheal rings which will support the trachea. बिल्कुल वैसे जैसे tracheal rings हमारे ट्रेकिया में होते हैं, जो कि हमारे ट्रेकिया को सपोर्ट करते हैं, so that the trachea that may not burst or that may not be damaged during the inspiration or expiration. ठीक है, तो वही tracheal rings जो lower 3 और 4 tracheal rings हैं यहाँ पर, and the upper half of the bronchi that forms a typical structure called as the syrinx in birds, which act as a sound producing organ. Now the cavity of this structure, that is the syrinx, it is called as the tympanum, and this tympanum that have a thick mucosal membrane which is present on this एरिया. यहाँ पे जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है वो काफी थिकन हो जाती है, कुशन लाइक जो है वो बन जाती है. सो ऑन द आउट, ये थिकनिंग यहाँ पे लिखा भी है, सो थिकन हो जाती है. सो दिस थिकनिंग ऑन द आउटर साइड, जो थिकन मेम्ब्रेन हमारी आउटर साइड पे जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इट इज कॉल्ड एज द एक्सटर्नल टिम्पैनिफॉर्म मेम्ब्रेन. टिम्पैनियम क्यों बोला? बिकॉज दिस कैविटी वेयर द सीरिंग इज प्रेजेंट, इट इज कॉल्ड एज द टिम्पैनम. सो द आउटर कवरिंग इज द external tympaniform membrane and the inner mucosal membrane is called as the internal tympaniform membrane. Now the internal tympaniform membrane, which is present at the bifurcation of the two bronchi, it is produced into the cavity of tympanum. ये थोड़ा सा आगे की ओर produced हो जाती है, and it is supported by the cartilage called as the pacillus. Now this pacillus, बिहाइंड दिस पैसिलस, इस पैसिलस से आगे भी थोड़ा सा ये जो मेम्ब्रेन है वो आगे की ओर मूव कर जाती है, एंड इट इज कॉल्ड एज द मेम्ब्रेना सेमिलरिस.
ठीक है। सो ये जो हमारा एरिया है एक्चुअली मेम्ब्रेना सेमिलरिस जो कि पैसिलस से सपोर्ट हो रहा है, इसकी वाइब्रेशन से ही जो है वो साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इन बर्ड्स द वाइब्रेशन ऑफ दिस मेम्ब्रेन, दैट इज द इंटरनल tympaniform membrane, this will result in the formation of the sound when the air is forcibly expelled out through the lungs। यहां नीचे lungs है, lungs से जब air forcefully expelled out होगी यहां से, तब ये वाइब्रेट होगी, ये वाली मेम्ब्रेन जो है वो वाइब्रेट करेगी और जो है वो साउंड प्रोड्यूस होगा। So this is the sound producing organ called as the syrinx। Now the quality of the sound, जो साउंड है वो आपकी उसकी हाई पिच होगी या लो पिच होगी, दैट इज डिटरमाइंड बाय द two pair of the muscles which are present here. One are the intrinsic syringeal muscles and another are the sternotracheal muscle. Now the internal syringeal muscles, they arise from the sides of the trachea and they are inserted within the syrinx। यहाँ साइड से राइज करेंगे और उसके मेम्ब्रेन में जो है वो इंसर्टेड रहेंगे। The second set of muscles is the sternotracheal muscles which arise from this the sternum। sternum जो है वो साथ ही में, पता ही आपको, ट्रेकिया के साथ ही sternum हमारा प्रेजेंट होता है आगे की ओर। So sternum से राइज करेंगे and they are again inserted into the trachea in the front of the syrinx। ठीक है। So यहाँ पर जो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, यहाँ पे साउंड की पिच को कंट्रोल करने के लिए भी हमारे मसल्स जो है वो हेल्प करते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सिरिंक्स, बिकॉज दिस इज पिक्यूलर टू द बर्ड्स ओनली, whereas the trachea of the other vertebrates, that is the amphibians, reptiles and the mammals, उसमें कोई भी जो ज्यादा peculiar structure जो है वो present नहीं है। So we have to learn this. So this is all about the chapter. With this, our chapter that comes to an end. Thank you.